Hello, students. I, Lokesh Seni, welcome you all once again to the Shankar IS Academy. So here we are in our daily current affairs series. Uh, like as you all know, last day we have launched our GSP, right? So those students are interested. There are only 2 seats are vacant now. Please, admission lines are still open. You can register. And even if you want to call on 90031900330, and on 20th February, we are launching our batch second for the prelims fitness test series 26. You can take an admission in there. This we provide you 4 tests. So today's topics for the discussion is the first topic we're going to discuss in today's lecture would be Milan Village, and second would be the Hornbill Restaurant. Third will be we are discussing about Shahi and Both and motherhood and the quit exit, and in the last we'll discuss about the prelims few topics which are very important from the prelims point of view. Now, Milan is an exercise, Indian Navy inaugurates the Milan village as a part of its exercise at Visakhapatnam, Vizag. Indian Navy inaugurated Milan village on 15th February 2026 at the Eastern Naval Command. So this is a keyword here. Eastern Naval Command is a part of flagship International Naval Exercise 2026. Okay. It's a multilateral naval exercise hosted by, Indian Navy, conducted under the Eastern Naval Command. Venue that is Visakhapatnam. Okay, and dates will be from 15th February to 25th February. Participation, more than 70 countries are going to take participation in this. It's one of the largest in the Indo-Pacific, and venue would be Visakhapatnam, and theme for 2026 would be the Camadair cooperation and collaboration. Background, it was first conducted in 1995, initially started as a biennial exercise conducted by the Eastern Naval Command, and major aim of this multilateral, exercise is so we can have a good diplomacy with all these countries. There will be a maritime cooperation, and there would be a interoperability. Milan village is located Eastern Naval Command, Visakhapatnam. Purpose is that we can have a cultural and social engagement zone, and delegates from more than 70 countries are, going to join this time. Features would be there will be a cultural performances, Indian handicrafts and handloom stalls would be there, naval souvenirs would be there, and regional Indian cuisines. You can have delicious Indian cuisines. Harbor phase, professional interactions would be there, subject matter expert exchange, cultural events would be there. And in the sea phase, we will have anti-sub air defense exercise, search and rescue operations, cooperative security missions, includes all complex maritime operations would be, exercised over here. So this is 2026 form part larger maritime convergence. मैंने आपको बताया कि more than 70 countries are going to participate in this Indian naval exercise, and IONS conclave would be of chiefs, where IONS stands with Indian Ocean Naval Symposium, established in 2008, a voluntary initiative by the Indian Navy in the IOR region, Indian Ocean region. Now, we'll discuss one question with reference to the exercise of Milan. Consider the following statements. It's a bilateral naval exercise. No, it's not bilateral. It's a multilateral naval exercise between India and the United States. So it's wrong. It is conducted under the Eastern Naval Command of Indian Navy. Correct. The exercise includes both harbor phase and sea phase operations. Correct. Is associated with the Indian Ocean Naval Symposium. So all these 3 statements are correct. This is not. So one only, no, two only, or the no. So C would be the correct answer of this, because it's a multilateral exercise, right? Yes, third. Now we'll discuss about Hornbill restaurants. They are not restaurants as we are assuming. Restaurants for these birds, restaurants for these, faunas. What are the Hornbill restaurants behind Chhattisgarh plan to make Tiger Reserve a heaven for the rare bird?
that that Udanti Sita Nadi Tiger Reserve is developing a cluster for fruit-bearing trees to help growing the population of the Malabar paid hornbill in this particular area. Right? What are the hornbill restaurants? Actually, these are the clusters of fruit-bearing trees planted in one area to provide a continuous food supply chain supported thing, prevent the migration due to food scarcity. Because what directly happens, क्योंकि जब यहाँ पे फूड सप्लाई नहीं होता है तो इस वजह से जो बर्ड्स होते हैं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, तो उनकी कंटिन्यूअस फूड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने हॉर्नबिल रेस्टोरेंट्स बनाए, ताकि हम उनकी ब्रीडिंग को भी सपोर्ट कर सकें, नेस्टिंग को भी सपोर्ट कर सकें और माइग्रेशन को जो है वो प्रिवेंट कर सकें। राइट? माइग्रेशन क्यों होता है? ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फूड, सो देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ फूड, so they will not migrate from that particular place. Strengthening the local population growth. Hornbill mainly eat fruits. जो hornbill होते हैं, they mainly eat fruits, especially the figs. So instead of random tree plantation, we are focusing on strategic plantation of hornbill friendly trees. Rather कोई दूसरे ट्रीज लगाने की बजाय जो हॉर्नबिल के लिए जो बेनिफिशियल रहते हैं, स्पेशली आपके जो फिग्स होते हैं, जो जिसको हम अंजीर भी कहते हैं हिंदी में, तो वी विल फोकस ऑन दोज फ्रूट ट्रीज जो हॉर्नबिल के लिए बेनिफिशियल रहेंगे और जो हॉर्नबिल खाता है। नाउ उदनती Sita Nadi Tiger Reserve, that is located in Chhattisgarh, located at the Gariband and Sari district of Chhattisgarh. So if tomorrow they can ask you directly that in which state this Udanati Sita Nadi Tiger Reserve is located, then the answer would be Chhattisgarh, and covers the area around 1,842.54 kilometers, established in 2009 by merging Udanati एंड सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। 2009 के अंदर इस उदयनती और सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मर्ज करके ये टाइगर रिजर्व बनाया गया। दैट्स अ कंजर्व वाइल्ड लाइफ एरिया, इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि जो उदयनती और सीता नदी टाइगर रिजर्व है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट हैबिटेट है? दैट द इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द एशियाटिक वाइल्ड बफेलोज, एंड दैट इवन इज अ स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ पे बंगाल टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, स्लॉथ बियर भी है, इंडियन वुल्फ भी देखने को मिलता है, एंड द माउस डियर इज ऑल्सो। सो बंगाल टाइगर, लेपर्ड इज, ठीक है, बियर इज देयर, एंड इंडियन वुल्फ इज ऑल्सो देयर। This is hydrologically named after Udanati and Sita Nadi. These rivers provide for this wildlife. ये जो उदयनती सीता नदी जो है वो नदियां हैं और उनके नाम पे ही एक रिजर्व बनाया है। एक्चुअली ये नदियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स हैं। जो भी फ्लोरा फोना इस एरिया के अंदर है, वेजिटेट डोमिनेटेड बाय साल और रोबस्टा, टीक एंड बैम्बू ट्रीज आर देयर फॉर ट्रॉपिक एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। अगर कोई आपसे ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट दिस उदयनती एंड सीता नदी जो टाइगर रिजर्व सपोर्ट्स, इस एरिया के अंदर ट्रॉपिकल ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कामार ट्राइब है, क्लासिफाइड बेसिकली इट्स वन ऑफ द PVTG आउट ऑफ 75 PVTG आर टोटल इन इंडिया, वी हैव 75 PVTG, और उसमें से कामार ट्राइब यहाँ पे रहती है, ट्रेडिशनली स्किल्ड इन द बैम्बू क्राफ्ट्स। बैम्बू क्राफ्ट से ये लोग जो है बास्केट्स, मैट। 2023 में कमार सेटलमेंट इन धमतरी बिकेम फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ टू रिसीव द हैबिटेट राइट्स, और इनको इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अब जो है हैबिटेट राइट्स भी मिल गए हैं। सो कमार ट्राइब इज वन ऑफ द PVTG ट्राइब, और इनकी ट्रेडिशनल बैम्बू ट्रीज होते हैं, उनसे उनका आर्ट एंड क्राफ्ट, बास्केट, मैट्स एंड अदर चीजें बनाते हैं। राइट? और फिर उसके अलावा गौंड ट्राइब भी यहाँ पे रहती है। अगेन दिस इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट prominent tribes in this particular region, right? Or shared cultural traits with Kamars, including clan Gotra. मतलब Kamars के साथ इनके गोत्रा भी मैच होते हैं। And then there is a Punjia tribe also recognized as a PVTG tribe. And this Kamar tribe, both are the part of PVTG. Now Malabar Pied Hornbill distribution, large hornbill endemic Indians, ये जितने भी हॉर्नबिल हैं, ये जो खास करके मालाबार हॉर्नबिल है, ये एंडेमिक है टू द इंडियन
found in the Western Ghats and part of Central and Eastern Ghats. Majorly found in Western Ghats, but they are found in parts of Central and Eastern Ghats also, known as the farmers of the forest. They are also known as the farmers of the forest. New आपको ये भी आ सकता है कि which of the bird is known as the farmers of the forest, then you can answer that for the seed and dispersal role. This is Malabar pied hornbill, right? How beautiful it is. Key characteristics, the appearance is the black body having white belly with white wing edges and white tail with a black tip. Large yellow bill with a black and yellow casque. And the males, they are having red eyes with black facial scale. And the female hornbills are having white and pinkish skin around. And their size is around 65 to 92 centimeter. And weight is about one hornbill weight around 1 kg. And their conservation, their IUCN status is near threatened. So we have to conserve them at all cost. Major threats is due to habitat loss that of more can stop the deforestation, riverine forest clearance, and poaching is one of the major reasons that why we have to conserve them, and their IUCN status you need to remember that is near threatened, and climate change projected major range of contraction by the 2060. Now, with reference to Malabar pied hornbill, consider the following statement. It is endemic to the South Asia, Southeast Asia. It is primarily a carnivorous species. No, it is listed as near threatened to the IUCN. Would be the correct answer, right? D would be the C would be the correct answer. Only third would be the correct answer. Now, Union had to launch two landmark initiatives, that is Shahi and Bodh, at the India AI Summit, which is कल से ही India AI Summit इंडिया में शुरू हुई है at Bharat Mandapam, Delhi, right? So Shahi is a national guidance framework to enable safe and ethical evidence-based inclusive adoption of artificial intelligence across India's healthcare system. मतलब हम healthcare जो सिस्टम है इंडिया उसके अंदर भी वी आर इंट्रोड्यूसिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस and that will be very safe, ethical, even the event-based and inclusive. We are adopting this particular model, and in both that is developed by the IIT Kanpur in collaboration with the authority, privacy preserve benchmarking platform to learn about event that is going to submit. New Delhi launched Indian Health Minister JP Nadda two key initiatives. The one is Shahi, and another one is in Shahi, it's a strategy for artificial intelligence in healthcare for India. How in India we can use artificial intelligence in our healthcare system, and in both that is benchmarking open data platform for health. It will be an open data platform for health, and we'll use artificial intelligence in that. The Shahi, the strategy for AI in healthcare for India, national guide framework. It's not as basically it's a policy framework, right? Of this Shahi would be safe ethical AI adaptation. So the word ethical is very important. That we are not only because whenever there is someone says about AI, so a lot of people thinks about unethical things also, because AI has some advantages. So AI has also disadvantages also on AI, because in AI it's very dangerous technology, as you all know, right? Both they have benefit also और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं. इवेंट बेस्ड हेल्थ केयर, ठीक है, इंक्लूसिव स्टेट्स, ठीक है. की फोकस एरियाज, गवर्नेंस मैकेनिज्म, डाटा स्टीवर्डशिप है, वैलिडेशन ऑफ एआई डिप्लॉयमेंट स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम रहेगा. एंड ये जो बोर्ड है दैट इज डेवलप्ड बाय द आईआईटी कानपुर विद द हेल्प ऑफ द नेशनल, और इसका बेंचमार्क रहेगा प्राइवेसी को प्रिजर्व करना और इवेलुएट करना है अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को यूज द रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर डाटा. मतलब एआई मॉडल को यूज करना है रियल वर्ल्ड हेल्थ डाटा के अंदर. डज नॉट शेयर data sheets, quality assurance would be there, transparency would be there, and there will be a trust building in the AI systems. Then there will be a link with the Ayushman Bharat Digital Mission, classified as a digital public good under the framework of Ayushman Bharat Digital Mission. ठीक है, these are the key components. Health facility registry would be there, healthcare professional registry would, and healthcare records interoperability.
Now, question about this Shahi and both. Shahi is a statutory authority created to regulate artificial intelligence in healthcare. It's not a statutory authority. It's a basically policy framework. Both enables benchmarking for AI model without sharing underlying healthcare data. So this is correct. Both has been developed under the Ayushman Bharat Digital Mission. Okay. National Health Authority is responsible for implementing the Ayushman Bharat Digital Mission. So I guess second, third, fourth would be the correct option. Yes, the second, third, fourth would be the correct option because SAHI is not a statutory authority. It's a basically a regulatory frame that how we can use artificial intelligence, right, in our national health policy or in our healthcare system. Now, motherhood and working force participation, maternity benefit is a program, but laws alone are not enough. So Maternity Benefit Act 1961, and then it was amended in 2017, scope and applicability that applies to all factory workers, mines, plantation, shops, establishment with 10 or more employees. तो मैटरनिटी बेनिफिट हर जगह देना पड़ेगा जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉयड काम करते हों, एक्सक्लूड्स द वुमेन कवर्ड अंडर द ईएसआई एक्ट 1948, और उन महिलाओं को ये एक्सक्लूड करता है जो कि ऑलरेडी जो है ईएसआई एक्ट जो है उसके अंदर 1940 एक्ट के अंदर जो कवर हो रही है, एंड दैट कवर्स परमानेंट टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल वुमेन एम्प्लॉयज ऑल्सो. जो परमानेंट टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल वुमेन एम्प्लॉयज हैं उनको भी मिलता है. एलिजिबिलिटी मस्ट हैव वर्कड एटलीस्ट 80 days in the preceding 12 months before expected delivery. एटलीस्ट उस कंपनी में उस जगह जो है इनको 80 days काम करना पड़ेगा प्रिसीडिंग द 12 months बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, राइट. और 26 वीक्स अकॉर्डिंग टू 2017 जो अमेंडमेंट किया मैटरनिटी एक्ट में, उसमें 26 की पेड हॉलीडेज मिलती है, राइट. राइट 26 वीक्स फॉर द फर्स्ट टू चिल्ड्रन, दो स्टार्टिंग के दो बच्चों के लिए 26, और उसके बाद इफ समवन इज गोइंग फॉर द थर्ड चाइल्ड देन इट विल रिड्यूस टू द 12 weeks. Then in third child will get only 12 weeks for the child on commissioning, mothers, surrogacy, and adoption of the child below 3 months. Work from home allowed after maternity leave, subject to the job nature and employment agreement. Creche facility is also there, mandatory for establishment. जहाँ पे 50 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं वहाँ पे क्रीच फैसिलिटी भी होनी चाहिए. मदर अलाउड 4 visits per day. एक महिला को जो है 4 विजिट तक. क्रीच फैसिलिटीज मींस जब बच्चे को दिन में 3-4 बार टेक केयर करनी पड़ती है ना, मदर हैज टू feed milk to a newborn baby. तो दिन में 4 बार a mother is being allowed to visit. Financial and healthcare provisions, paid wages, average daily wages rate during the leave. ठीक है. If employed does not provide free maternity care, medical bonus if employed does not provide free maternity care, additional leave 6 फॉर मिस कैरेज, 6 week की छुट्टी मिलेगी मिस कैरेज के लिए, 2 weeks फॉर द ट्यूबेक्टोमी एंड अप टू 1 month फॉर द प्रेगनेंसी रिलेटेड इलनेस. और प्रेगनेंसी रिलेटेड इलनेस के लिए भी 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है, राइट. दीज आर द अदर प्रोविजंस इन दिस. लीगल सेफगार्ड, नो डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मैटरनिटी लीव. आप किसी भी महिला को ना डिसमिस कर सकते हैं, राइट, जब वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मैटरनिटी लीव. 2 nursing breaks daily until the child is 15 month old, और 2 नर्सिंग ब्रेक भी मिलेंगे जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता. एंड पेनल्टीज इंक्लूड इम्प्रिजमेंट एंड फाइन्स फॉर द नॉन कॉम्प्लायंस. देयर विल बी पेनल्टी, और अरेस्ट भी हो सकता है और फाइन, और दोनों भी लग सकते हैं अगर इस लॉ को किसी ने कॉम्प्लाई नहीं किया तो. रियलिटी, वुमेन आर एक्सेल एकेडमिकली बट डिक्लाइन इन सीनियर रोल्स. वुमेन जो है वो एक्सेल करती है एकेडमिकली बट उनको जो है सीनियर रोल नहीं दिया जाता है. मदरहुड ऑफन ट्रिगर्स द एग्जिट एंड मैटरनिटी बेनिफिट पेड लीव जो मिलती है दैट्स अ प्रोग्रेसिव बट कैनॉट चेंज द वर्क business. So post-leave challenges reduce the role, slower growth, and cushions the commitment. Government sectors offer extended child care leave, private sector support. There is a key gap also, lack of work, the affordable child care laws. जो laws हैं वो इकलौते चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. माइंडसेट जो है उसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इन इंडिया जो पेट्रियार्किकल माइंडसेट है जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक चीजें चेंज नहीं होगा. शेयर्ड फैमिली वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी क्रूशियल. एंड पेरेंटहुड इफेक्ट, she is a Claudia Golden Nobel laureate for economics in 2023. So earlier gender gaps were linked to the education and occupational differences. Today the gap largely widens after the birth of first child. आज जो gap है वो wide है after the birth of the first child. ठीक है.
पहले जो जेंडर जो पे गैप होते थे वो लिंक्ड होते थे एजुकेशन की वजह से, लेकिन ये कहना चाह रही है आज जेंडर जो पे गैप है वो इस वजह से होता है जब महिला एक बच्चे को जन्म दे देती है, जैसे पहले बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद लेनी पड़ती है। तो डायरेक्टली वो कहना चाह रही है कि आज भी जो है वो बायसनेस है, और पहले भी बायसनेस थी। पहले बायसनेस एजुकेशन बेसिस पे देखी जाती थी, आज biasness जो है व्हेन वुमन गिव अ फर्स्ट बर्थ चाइल्ड। मेजर्स कैन बी टेकन, हमें प्रमोट करना फ्लेक्सिबल वर्क, हाइब्रिड मॉडल, स्ट्रक्चरल रिटर्न टू वर्क हो गया, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, क्रीच फैसिलिटीज भी बढ़ानी पड़ेगी, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, ठीक है। और हमें इंश्योर स्ट्रॉन्गर पैटर्निटी लीव टू प्रमोट केयर गिविंग। और एक नया कॉन्सेप्ट है पैटर्निटी, इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर ओनली टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर एज वेल। तो इसलिए हमें पैटर्निटी लीव को भी करना पड़ेगा। शिफ्ट वर्क कल्चर, आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन एंड रिड्यूस द बायस करना पड़ेगा कंपनीज टू इंप्रूव द फीमेल रिटेंशन एंड फॉर्मलाइज द केयर। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 15 मार्क का, 250 वर्ड का। यू हैव टू राइट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट थ्रू द प्रोग्रेसिव इंटेंट हैज नॉट बीन सफिशिएंट टू प्रिवेंट इट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन को आपको लिखना है, ऑलरेडी इंटेंट आपको दिया गया है, ट्राई टू राइट राइट। फिर हेरात शिवरात्रि इन कश्मीर फेस्टिवल है, हेरात सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस दोज स्टिल इन कश्मीर। ये एक हेरात है, शिवरात्रि फेस्टिवल बनाया जाता है कश्मीर में, खासकर उन कश्मीरी पंडितों को द्वारा जो कि 1989 के बाद डिस्प्लेस हो गए थे। ट्रेडिशन है यूनिक टू कश्मीर, पंडित प्रिपेयर मटन एंड फिश डिशेस। जो कश्मीरी पंडित हैं वो मटन और फिश डिशेस बनाते हैं। पास्ट ब्रदरहुड हिंदूज गिव्स वॉलनट टू मुस्लिम नेबर्स, और हिंदूज जो हैं वो अखरोट देते हैं अपने पड़ोसी मुसलमानों को। एंड द मुस्लिम्स रेसिप्रोकेटेड विद लोटस स्टेम, वो लोटस स्टेम देते हैं, नद्रू जिसको कहते हैं, राइट। And Novruz symbolizing the shared culture. Current situation, walnut sharing rare now due to 1990s migration. Walnut sharing अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, खास करके 1990 के दशक के बाद जो इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके बाद से। पंडित थ्रोन श्रीनगर टेम्पल, हनुमान, शारिका देवी एंड शंकराचार्य। सेंटिमेंट है नॉस्टैल्जिक रिकलेक्शंस ऑफ हार्मनी शेयर्ड बाय द एल्डर्स एंड सोशल मीडिया। दिल्ली बहु आधार स्कीम, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आईटी डिवीजन विद सपोर्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव है हमें एक डिजिटल लैंड अभी ने अपना एक डिजिटल लैंड मैप जो है वो लॉन्च किया है विद द हेल्प ऑफ होम मिनिस्ट्री एंड अर्बन अफेयर्स। ड्रोन सर्वेज और हाई रिजोल्यूशन इमेजिनिंग आइडेंटिफिकेशन, ईच लैंड पार्सल गेट्स 14 डिजिटल, हर जमीन को जो है वो एक नंबर मिला है, दैट इज 14 डिजिट यूएल पिन। ओनर्स रिसीव बहु आधार कार्ड बेनिफिट। सेफ गार्ड्स प्रॉपर्टी राइट, ये सेफ गार्ड करता है आपके प्रॉपर्टी राइट को, और जो कर्ब्स करेगा करप्शन को, प्रिवेंट करेगा डिस्प्यूट, सिंप्लीफाई द ओनरशिप, और इससे सिंप्लीफाई हो जाएगी ओनरशिप वेरिफिकेशन भी। लोग जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, राइट, कोई किसी को मकान किराए पे देता है तो उससे कब्जा कर लेते हैं। तो जब हर जमीन का ऑलरेडी एक नंबर होगा 14, तो उससे कि जितना भी ये करप्शन है या जो है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज ईपा बेटाडीन। 5 European states concluded Alexei Navalny was killed using the epibetadine, a rare poison, dart frog toxin directly implicating the Russian state. ये एक लीथल डोज है, इट कॉज द पैरालिसिस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड डेथ। ये एक तरह से बहुत खतरनाक जहर है, इट कॉजेज द पैरालिसिस और ब्रीथ सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जो एपाबेटेटिन है, वन ऑफ द अर्थ डेडलीस्ट पॉइजन एंड 2000 times stronger than the morphine found in the Nevengian biological samples. The toxin is not found naturally in Russia. ये toxin not found naturally in Russia. It found in the Ecuadorian dart frogs. ये जो मेंढक हैं इनके अंदर ही मिलता है इन साउथ अमेरिका। इंडिजिनियस ट्राइब यूजेस टॉक्सिन इन द फॉर द ब्लो गन्स व्हेन दे हंट। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स आर नेटिव टू द ट्रॉपिकल एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका। ये जो डार्ट फ्रॉग्स हैं दे आर टू दिस सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड द फ्रॉग्स आर कलर्ड एज वार्निंग सिग्नल। ये जो फ्रॉग इनका जो ब्राइटली कलर्ड होता है, इनका वार्निंग सिग्नल्स टू प्रेडिएटर्स दैट दे कंटेन पावरफुल टॉक्सिन्स इन द स्किन, कि इन लोगों के पास जो है पावरफुल टॉक्सिन्स है। इट इज नॉट क्लियर हाउ द टॉक्सिन वाज एडमिनिस्टर्ड टू द निमनली। Now, epibetadine, occasionally mentioned in scientific research news, is the best known as a natural occurring alkaloid
derived from the certain frog species studied for its potent anaglyptic properties. A synthetic pesticide used in tropical agriculture? No. A plant hormone regulating the fruit ripening? No. A maritime toxin produced by the harmful algal blooms? No. The correct answer would be the A, a naturally occurring alkaloid. It's basically a poison derived from the certain frog species, which is found in basically the Central America, right? For its potent anaglyptic properties. Yes, this is the correct answer. Please like, comment, and share. Keep watching Shankar IAS Academy. Thank you so much.